We can see a nostril kind of thing over here, which helps the air to get inside in a very compressed and a pressurized manner. Once the air is in from here, we have the raw air bags on the side, which helps the air to come inside in a very huge amount. And it goes till the engine. Therefore, we need two exhausts, which is 1 and 2. The air which is coming inside is in a very huge amount, so for that air, one exhaust is not enough. Therefore, we require two exhausts. Second thing is that this body is made up of carbon fiber. Even the tank is made up of carbon fiber. So the total weight of this bike is 119 kgs only, the dry weight. Coming to these parts, the 3 buttons are for the engine setting mode, which while you are taking the sharp turns or while you are racing in a very high speed manner. This is the stabilizer for your taking the sharp turns. Just like this. Yes. These are for giving a balance out to your steerings. So coming on to the algo aluminium, this is used in the wheel, which is made up of this. The special algo aluminium which is used. And recently it made a record in Thailand, which is 216 km/h of speed. So these bikes are not road legal, but these are specially designed for the racing and the championships. And this is a used bike in championship. So you will be seeing a lot of accidents over here, like it's all broken. And this year in Thailand, one of the Indian made a record, coming third in the race for the first time. So one of the Indian won this for the first time, coming third in position, and the competition was held in Thailand, which is your Chang International Circuit competition. This bike is used in OMC, which is One Maker Championship, and in India it is held once in a year in Chennai. So if you want to take part in any of the race and competition, you can go and just register yourself for the... Yes. And if you have an Apache, then also you need to register, and you need to have a racing license specifically for all these bikes. It's not road legal. अच्छा, जैसे मैंने बता दिया है, वैसे बात कर लेता हूँ इसकी जो प्रेजेंस है। जैसे इसका जो डिस्क साइज है, आप डिस्क साइज देख लो, ये पेट्रोल डिस्क है, और पेट्रोल डिस्क में ये बहुत ही मायना नहीं, बहुत परफॉर्मेंस पेट्रोल डिस्क के जो ब्रेक पर यूज़ की गई इसमें। और इसमें दिखाता हूँ आपको, तो ओवरऑल इसका जो डिस्क साइज है वो 320 mm का डिस्क है, और इसमें यूज़ की जा रही है मिशेलिन के रोड 5 टायर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट बाइक है। और इसमें बताया था, उसमें हमने बताया था ये रेन इनफ्लो है, जिसमें आपको दिखाया था ये कुछ ओवरऑल ऐसा लुक है। और बता दूँ पूरा, तो इसमें ये आपको दे रखे हैं ब्रेक है, इसमें आपको यूज़ कर रखे हैं, जैसे कि ब्रेक के कैलिपर्स, जैसे आपको दिखा दूँ ये ब्रेक के कैलिपर्स हैं। और बाकी का ओवरऑल कुछ ऐसा इसमें जो बॉडी जो यूज़ की गई है वो पूरी कार्बन फाइबर है। इंडिया फर्स्ट सेगमेंट जिसमें कार्बन फाइबर, पूरा कार्बन फाइबर जो है उसके रियर में आपको बता दूँ, तो रियर में आपको दिखा दूँ, तो रियर में भी आपको सेम है, जो कि पावर फाइबर है। और जो इसमें 240 mm का रियर का पैडल डिस्क है।